Good morning, everyone. Welcome to BYJU'S Exam Prep. My name is Alpa Sharma, and this is our weekly editorial analysis. Can you hear and see me clearly, everybody? I hope I'm clearly audible and visible. Very, very good morning. Good morning, Kumar Gaurav. Yes, I'm clearly audible and visible. Thank you, Dia, for confirming yet again. Yes, clearly audible and visible. How are you guys today? I hope you had seen yesterday's class, and today, as promised, I've brought an article for you on magic, on rituals. Not black magic, don't worry about that. Very, very interesting. It will fill your heart with so much of positivity. I think the closure to this week needed this article. And I'm sure you're going to thank me by the end of the article. Ma'am, thank you for bringing this article. Our week ends with on a very positive note, on a very good note. So let's quickly start our session. Let's see what are we going to be doing today. But before that, tomorrow at 12 in the night, our All India Open mock and its window closes. तो लेट नहीं करना है. देखो आज दे दो नहीं तो कल दे दो, बट मॉक दे दो ये वाला, है ना, बिकॉज इट्स योर चांस टू नो योर रैंकिंग अमंग्स थाउजेंड्स ऑफ किड्स. और मॉक नहीं दोगे तो कैसे पता चलेगा भाई कहाँ स्टैंड करते हो, कितना हार्ड वर्क करना है. तो मॉक जल्दी जल्दी से दे दो, वेट नहीं करो, है ना, क्योंकि कल विंडो क्लोज हो जाएगा. अब क्या करेंगे, आज एक आर्टिकल करेंगे. सोर्स मैं नहीं बताऊंगी. सोर्स इज अ मैगजीन दैट यू गाइज प्रॉब्ली आर नॉट अवेयर ऑफ. बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है. द मैगजीन इज ऑल्सो a pretty interesting one. If you want, I can share the link of the magazine with you by the end of the class. Okay, so ठीक है, I think I can do that. आप उसमें से बहुत सारे articles पढ़ सकते हो. If you're bored of reading articles from Aeon, I'll recommend this magazine to you by the end of the class. And then furthermore, we're going to be doing vocabulary from today's article. Not a lot of difficult words, कुछ है उस पे काम करेंगे. Inferences बहुत सारे हैं. Main idea फिर भी easy है, but tone of the author easy नहीं है. Tone of the author is tricky in today's article, so we're going to be focusing a lot over the tone of the author. ये आपका होमवर्क होगा जो हम क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे. Okay, so yes, ready everyone? Before I show you the article, एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे. Honestly answer करना, okay? How many of you follow rituals? Rituals on which you believe ये आपका एग्जाम पास करवा देगा या ये आपको एक डिफिकल्ट सिचुएशन से निकाल देगा. I have taught a lot of students over the last 1.5 decade. बहुत साल से पढ़ा रही हूँ मैं. I see कुछ students ना अपने बुक के ऊपर में ओम नमः शिवाय, गणेशाय नमः, जो भी जिस भी गॉड को बिलीव करते हैं, they start the page, they write it at the top and then they start studying. Or I see a lot of people who enter the class who touch the teacher's feet or who touch the ground before entering the class. आपका भी कोई ऐसा रिचुअल है जो आप फॉलो करते हो? I'd like to know that from you. Is there a similar ritual that you follow? Ashi, I'll not use that word. I'll use the word ritual and not superstition. क्योंकि उसमें आपका बिलीफ है, वो मेरे लिए सुपरस्टिशन हो सकता है. Preeti, of course I will. Thank you for reminding me. Yes, so many people do. All those people who believe, मैम ये क्या बकवास है, ऐसा कौन करता है? मैं बताती हूँ ऐसा कौन करता है. ऐसा करते हैं राफेल नडाल. ऐसा करते हैं बहुत सारे प्लेयर्स जो ऑलरेडी अपना एक नाम बना चुके हैं, जिसके लिए, और वो एक ऐसा नाम है जो शायद उनकी पोजीशन और कोई नहीं ले सकता. Before I show you this article furthermore, we had Sachin Tendulkar who followed rituals. We had Nadal who followed rituals. We had many players who followed rituals. तो अगर आप फॉलो करते हो, वो आपका बिलीफ है और उस पे हम कमेंट नहीं करेंगे. लेकिन अच्छा, यू डोंट ईट फूड बिफोर एग्जामिनेशन. जय माता दी बोलते हो? अच्छा, हाँ, यस, हम बुक को भी माता बोलते हैं. एग्जैक्टली. Read this page and then we shall talk more about the magic of rituals. Welcome to this world. Read the page and send me a done.
Yes, Adi, it does. You know, the whole page is full of premise. Agreed everyone? सिर्फ premise है पूरे पेज में. Absolutely, you should have skimmed. वो कुछ repetitive action करते हैं हर मैच के पहले. वो क्या एक्शन करते हैं? आप स्किप कर सकते हो वो पार्ट. बिकॉज वेरी लाइकली ऑथर इन एक्शंस के बारे में, ये एक्शंस क्या है उनसे कंसर्न नहीं है, इनका कोई रेलेवेंस है ऑथर उससे कंसर्न है. तो रिमेंबर व्हेन यू रीडिंग एन आर्टिकल और उसका जब प्लॉट सेट हो रहा होता ना, इसकी जगह अगर वो 2 टाल्स की जगह 4 टाल्स उठाते या 1 टाल उठाते, आपका मेन आइडिया हैम्पर नहीं होता. दिस इज ऑल प्रेमिस. इसको स्किम करो. ये सिर्फ एक बैकग्राउंड सेट कर रहा है towards the relevance of the rituals Nadal follows here. Also, Nadal की जगह शायद कोई और होता तो भी शायद मेन आइडिया सेम रहता, शायद. Let's go ahead and see. I'm going to skip this complete page. Page number 2. Trusty, yes. Did you notice that? चलो. First question. If you think this is superstition, Nadal says ये सब crap है, superstition नहीं है. क्योंकि मैं मैच जीतता हूं तो मैं हारता भी तो हूं, लेकिन हारने वाले मैच के बाद मैं फिर वही रिचुअल करता हूं. तो ये जीतने के लिए नहीं कर रहा हूं मैं रिचुअल. So there could be a question arising, why does he do this ritual? He does these because he wants an order in his head. एक certainty चाहिए उनको अपने head में. और जब वो ये रिचुअल्स करते हो तो उनको एक ऑर्डर लगता है कि उनकी लाइफ उनके कंट्रोल में है, सब कुछ ऑर्डर में है. Probably, I'm just assuming, it helps him think straight. So while he's playing, his mind is not anxious. It helps him control his anxiety. Now, which line or paragraph is the argument in the whole page? It's a practice. Yes. Now, which line, which paragraph is the argument of the page? Yes. The last line, the last paragraph. Exactly. Also, I have said this before, I will say this again. जब पैराग्राफ में क्वेश्चंस आते हैं, आपको बहुत अटेंशन देना होता है उन क्वेश्चंस में, क्योंकि उन क्वेश्चंस का आंसर होगा. ऑथर क्वेश्चन ही इसलिए पुट अप करता है ताकि वो आपका अटेंशन लेके आए और फिर उनको आंसर करे. आपके दिमाग में वो क्वेश्चन बैठाए पहले और फिर उनको आंसर करे. तो ऑथर डिस्कस करना चाहता है इन क्वेश्चंस को. ये प्राइमरी पर्पस होता है यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस पुट अप करने का. ये क्वेश्चंस यूजुअली फर्स्ट या सेकंड पेज में आ जाते हैं, कभी कभी बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ में भी आ जाते हैं. पहले ही क्वेश्चन वो पोज कर देता है और फिर उनको आंसर करने की कोशिश करता है. यहाँ क्वेश्चन क्या है? यहाँ क्वेश्चन ये है कि क्या ये रिचुअल्स जेन्युइनली जीतने में लोगों को हेल्प करते हैं या फिर सिर्फ आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करते हैं रियल प्रॉब्लम से. रियल प्रॉब्लम क्या है? रियल प्रॉब्लम है मैथ्स का एग्जाम है, पढ़ा नहीं है मैंने, तो मैं हनुमान चालीसा, आई एम अ हिंदू सो दैट्स व्हाई आई वुड कोट हनुमान चालीसा, मैं हनुमान चालीसा पढ़ लूंगी कि शायद वो हनुमान चालीसा मुझे पास करा दे. हो सकता है ये जो रिचुअल है इट्स अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द रियल प्रॉब्लम दैट आई हैवंट स्टडीड मैथ्स एट ऑल, और डज इट जेन्युइनली हेल्प मी? उसको आंसर करने की कोशिश करेगा ऑथर नेक्स्ट पैराग्राफ में. ये गारंटीड है कि ये क्या सुपरस्टिशन है या ये जेन्युइनली आपको हेल्प करता है. अग्रीड एवरीवन? Yes, if it is effective or not is the question. And author will certainly try to answer this question by the end. Let's move to the next page.
But before that, I'll tell you something personally. Do I follow rituals? I do. I certainly do. I've been teaching for the last 12 years. Do I follow rituals before my classes? I do. So, the reason why I do it, I'll disclose that later on. Why Nadal does it, ये आपको पता है. आगे चलते हैं, next page पढ़ते हैं. Page number 3. Read this and send me a done. Stuti, that's my point. That's quick, Arya. Done. Can I draw here through this page an analogy between what our religion teaches us, reciting hymns, singing bhajans, because I'm a Hindu, I would quote them, or reading a holy religious book again and again and again. Every religion promotes that, right? Islam does, Christianity does, Hinduism does, that you need to read your religious book, scriptures again and again and again. Can I draw an analogy between this, lowering this, to what our religion promotes? For me, that's the only reason why I do it. Yes. Rituals lower our anxiety. So, when you practice something again and again, and you have a belief that this will help you, it might not help you with achieving something, but it will help your mind becoming calm. And when you are calm, you're likely to achieve something. So, probably the religion didn't help us achieve something, our own calm mind did. And that repetitive action, reciting something again and again, helped us. You know, it's commonly said, when you're scared of something, uh, recite Hanuman Chalisa. Hanumanji is not going to come and save me from something that I'm scared of, but probably reciting those words again and again would make my mind calm and help me think straight. That's exactly what rituals did to Rafael Nadal. That's exactly what rituals did to the women in the war who were anxious because of the war and who were reciting psalms because they wanted their. It's like meditation. It helps you to concentrate better. So, you know, if you have a ritual that you follow, if you have a favorite t-shirt that you wear every time you have an examination, go ahead, do it. It is going to help you make your mind calm. It will make you stress-free, lower your anxiety. इस page में the example of the Lebanon war is only and only premise. Similar is the test of saliva and hair is also an explanation of how they found if rituals helped people or not. Okay, so probably if I link it to the penultimate page where the question was put up कि क्या ये ritual genuinely help करते हैं या फिर सिर्फ ये आपको distract करते हैं? Looks like they genuinely help you because वो आपको सीधा सोचने में help करते हैं. And thus you succeed. Let's go to the next page. But before that, we've launched our test series and a lot of hard work goes behind that. We have created an exceptionally good set of tests for you. We're going through a lot of scrutiny in our tests. This is going to be very, very close to the actual examination. Make sure you enroll yourself if you haven't enrolled yourself right away.
and crash course free on YouTube. If you're targeting CLAT 2023, you have to attend it. कल से start हो रहा है, every Monday, Wednesday, Friday, Sunday 9 PM. मिस नहीं करना है, फ्री है. नेक्स्ट पेज, कहानी पढ़ते हैं आगे, क्या बोलता है ऑथर. My first question, why do you think recitation of rosary helped in decreasing the anxiety and not watching a religious film? Why? What is the reason? Self participation, okay. Adi, are you Adit from one of our 23 batches? If you're Adit, I have a big complaint from you with you. It calmed them. Okay, any other guesses apart from Adi's and Dia's guess? Okay, you aren't. To check anxiety level? No, no, no. None of you could get the correct answer. Think again. रोजरी रिसाइट करने से काम हुआ, रिलीजियस मूवी देखने से नहीं हुआ. क्यों? Do you know what a rosary is? Do you know that? Have you seen Christians wearing those beads with a cross? वो beads rosary है. अब guess करो. Are she very close? Okay. Looking, you're very close. मैं आंसर करती हूँ. It's repetition. रोजरी जब आप हिंदूज में भी आप माला पढ़ते हैं, रोजरी में भी आप रिपीट करते हैं चीजें. इट्स रेपिटेशन. मूवी में रेपिटेशन नहीं था, रोजरी में रेपिटेशन था. What did Nadal do? He kept doing the same ritual over and over and over again. मामा जब मॉर्निंग में प्रे करती है तो सेम मंत्र एवरी मॉर्निंग बोलती है, सेम तरीके से रोज पूजा करती है. माई मॉम डज दैट every single day, same procedure. What is it? That's repetition. So जब आप रिसाइट करते हैं, आप रिपीट करते हैं चीजें again and again and again. What does repetition do to you? It makes things organized. Looks like everything is in your control. Movie में things are not in your control. That means religion probably इतना impactful role नहीं play करता जितना impactful role repetition play करता है. Of course, there's a correlation between repetition and your faith. Faith को आप नहीं हटा सकते हैं, right? So वो repetition जो है combined with faith, that ensures that you are stress free. आपको पता है आपने सोच लिया था there's somebody who's going to take care of everything else. I just have to work hard and put my best. Making things in a row. So the reason why rosary helped was repetition. Okay? Next page. Read the page and send me a done.
Argument from the page. What is the argument in the page? मुझे लग रहा है आज की क्लास के बाद ना सबने रिचुअल स्टार्ट कर देना है. हाँ, I would promote that. I do it. I am a big promoter of it. I taught my daughter to do it too. Which is the argument in the page? Is there an argument? Last line? नहीं बच्चे, आशी वो भी सिर्फ और सिर्फ प्रेमिस का पार्ट है. ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो है ना बच्चे, एज अ रिजल्ट द बॉडी, हाँ लास्ट लाइन आप बोल सकते हो, ठीक है, इट्स अ कंक्लूजन. अग्रीड, ओके, अग्रीड नैंशी एंड आशी. As a result, the body maintains a state of high alert which is experienced in anxiety is basically the conclusion that was drawn from the entire experiment. At all, अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा इस पेज से तो वो एक फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा. ऑलवेज अगर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, अगर आप साइंस स्टूडेंट नहीं है, अगर आपके लिए डेटा ही नंबर्स ही नाम ये वर्ड्स याद रखना, जार्गन याद रखना डिफिकल्ट है ना, अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पढ़ो, कम बैक टू द पैराग्राफ, रिकन्फर्म योर आंसर एंड मार्क इट. आपको स्ट्रेस नहीं लेना कि भाई ये क्या एक्सपेरिमेंट है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, हटाओ उसको, स्ट्रेस नहीं लेना है ना. तो द ओनली इंपॉर्टेंट लाइन हियर इज दैट रिचुअल्स हेल्प यू लोअर एंजाइटी. और एंजाइटी होती है तो क्या होता है, ये होता है, ये हमने एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड किया. ओके, इट्स इज ओके इफ यू डोंट डू इट एवर, इट्स एब्सोल्युटली ओके. ये देखो पर्सनल चॉइस है, निडाल करते हैं बट और प्लेयर्स नहीं करते होंगे, ये पर्सनल चॉइस है, ये कुछ लोगों को हेल्प करता है. इट्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल थिंग देन अ रिलीजियस थिंग, आई थिंक. नेक्स्ट पेज, रीड दिस एंड सेंड मी डन. कितनी स्टडीज करी है देखिए उन्होंने कंक्लूजन निकालने से पहले. मॉरिशस में भी कर ली, फिशिंग विलेज में भी कर ली. So let me ask you a question. How many of your atheists, नहीं बिलीव करते कि गॉड एग्जिस्ट करता है? होगा कोई सुप्रीम पावर, बट मेरे लिए गॉड नहीं है. हो सकता है कुछ साइंस बेस्ड पावर हो जो हमको नहीं पता अभी तक. How many of your atheists? This entire example that is used here with the Marathi Hindu temple. Not you. Okay, I have Hariom. I have Akshay. Okay, not atheist. Okay, I have a simple question. You may be somebody who doesn't believe in God, and I'm not a promoter of God for sure. Certainly not me. The question here is, when you go to a place of worship, do you feel calm? Do you feel the calm in your mind? I'm not promoting religion. I don't care which religion you belong to. Please don't drag me there. My question is, when you go to a religious place, do you feel the calm? And can we link the calm to the entire gist of the passage we were referring to? Now, it could be a religious place for any religion. I, being a Hindu, can go to a dargah or can go to a church and still feel the calm. Very likely the calm that I feel, despite I being an atheist and a promoter of atheism, the calm is associated with the rituals we follow. Of course, Ashi. Of course. So the calm is associated with the rituals you follow. If the temple is or the religious place is crowded, you wouldn't feel the calm because you cannot perform the ritual. You can't light an incense or you can't उसका आप रोटेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है, सो पेरिफेरी नहीं क्रॉस कर सकते हो. सो अल्टीमेटली जिस्ट क्या है, जिस्ट ये है कि ये जो एग्जाम्पल है ऑफ हाउ
the Marathi Hindu temple was visited by many women dressed appropriately, following rituals, circle karna, incense stick light karna. It's a अच्छा मैम फॉर करंट अफेयर्स हाउ टू प्रिपेयर एंड मेक नोट्स. बच्चे ये आपको करंट अफेयर्स की क्लास में पता लगेगा कल 11 बजे. उसके लिए कल 11 बजे लाइव आना. आपको सालिक सर मिलेंगे, सालिक सर बताएंगे आपको कैसे. सालिक सर इज द जीके टीचर. ठीक है. सो अल्टीमेटली आई डोंट केयर व्हाट रिलीजन यू बिलोंग टू. आई डोंट केयर आपका क्या रिलीजन है या आप क्या प्रैक्टिस फॉलो करते हैं. द इंटायर कोरिलेशन इज जो यहाँ लोग मूवमेंट कर रहे थे, रिचुअल्स कर रहे थे, it was a way of bringing calm to their mind. So when people go to religious places, probably the aura and the ritual they follow that brings calm to them. Next page. Read this and send me a done. अच्छा इससे पहले ये लाइक बटन क्यों नहीं हिट हुआ अभी तक? पहले करो. Right now. It takes me a lot of effort to hunt for good articles and bring it to you so that you're motivated and you learn things. Hit the like button right now. फिर आगे पढ़ो ये पेज. This example is such a beautiful one. First paragraph is the argument. You can't miss the first paragraph. Author ने 3 चीजों का claim किया है. ये author का personal conclusion है from the experiments he had done at various places. The Marathi Hindu temple, the Mauritius experiment and the other experiments जो maths का exam लेने जा रहे थे students. उससे ये conclusion निकाला author ने 3. I have highlighted the 3 words for you. It's rigidity, repetition, redundancy. ये तीनों चीजों का मिक्सचर ensures that you feel uncontrollable चीजें मेरे कंट्रोल में हैं. आपको there are people who go to some other babas and they say ये ऐसा कर लो, ऐसा लगातार करते रहो, ये ठीक हो जाएंगी चीजें. Probably the things do nothing to us. Probably they do. We don't know. Experiment can't prove that. But the experiment certainly can prove it कि अगर rigidity से करोगे, इसी तरीके से करना है, पहले लेफ्ट हैंड फिर राइट हैंड, इसी तरीके से करना है, that's rigidity. Repetition रोज करना है और redundancy लंबे टाइम तक करना है, 1 साल तक करो, 2 साल तक करो. So these are the 3 things which will ensure कि आपको लगेगा कि हाँ ये चीजें मेरे कंट्रोल में हैं. Of course do it without any expectation, because if you do it with expectation तब कुछ नहीं होगा. Okay, so ultimately now see this example. I'll ask you a personal question. Have you slept okay, I'll rephrase it. There may be people in your house who snore, right? Maybe your dad, maybe your mom. There may be people in your house who snore. Does it bother you? Or you're okay? My nanny used to snore. I used to sleep with her while I was younger and I was never bothered. It was a part and parcel. Why was I not bothered is my question. And what is the answer? You have to tell me that. Of course, older people do. But why does it not bother you so much? If you sleep with them, it wouldn't bother you so much. Your sister as well? ये bothersome नहीं होता. Why is it not bothersome for you? Why is that you're okay now? It's not bothersome because it's repetitive. तो आपको आदत हो जाती है repetitive action देखने की, सुनने की. In fact, when my nanny would stop snoring in the night, I would be scared. Nani, is everything fine? I would get up and check on her. तो स्नोरिंग एक्चुअली मुझे इंश्योर करता था कि चीजें मेरे कंट्रोल में है. चलो नानी ठीक है.
जब नानी का स्नोर बंद हो जाता था ना, तब मुझे आई एम accustomed टू इट, इट्स रेपिटेटिव, ये हैबिट हो जाती है. सो रेपिटेशन इज द की. Our mind tells us ये चीजें रेपिटेटिव हो रही हैं. जब वो रेपिटेशन बंद हो जाता है तब डर लगता है कि भाई ये चीजें मेरे कंट्रोल से बाहर हो रही है, रिपीट क्यों नहीं हो रहा है, ये स्नोरिंग की आवाज क्यों नहीं आ रही है. So this example, shaking wala, explains exactly the same thing. Did you get the example, everyone? Example आया सबको समझ में ये? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कंक्लूजन अभी तक आपको समझ में आ गया होगा पैसेज का. Last page, I think. Let me check. Yeah, that's the last page. Read the last page and see if you can identify the conclusion. This page can have many, many questions. I've highlighted a few important lines for you. Pay attention to them. Did you understand the lines that I've highlighted? See, one, our brain is a computer. It's a device. Any device, if it already has, so for example, robots, AI. AI का क्या काम है? आपने already data feed किया है उसके अंदर, उस according वो काम करेगा. Similar is mind. Data already fed है, उस according वो काम करेगा. लेकिन जब डेटा नहीं है, कुछ चीज नया है, तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी हो जाती है, अनसर्टिनिटी हो जाती है, एंड दैट लीड्स टू एंजाइटी. जब आप ये रेपिटेटिव एक्शंस करते हैं, जब आप रिचुअल्स करते हैं, तो आपके ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है कि भाई ये रेपिटेटिव चीज हो रही है, तो पता है मुझे ऑलरेडी, तो मुझे स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, कुछ नया नहीं हो रहा है. इट्स अ रेपिटेटिव थिंग that helps your brain calm down and stay away from anxiety. So, ultimately, can I say the author is a promoter of rituals and practice of these rituals? Yes, absolutely. Our brain is habituated. Yes, Debadrita. So, the author certainly is a promoter of ritual. He is backing it up with data, many experiments. He says these rituals are justified. It has a scientific backing that they will help you. Yeah. Now, a very important question I have before I continue and suggest a very good magazine where I took this article from. I'll be recommending that. I'll be sharing the link with you in the chat box right now. I'll also open the magazine in the background instead of the slide that you see right now. आपका एक छोटा सा होमवर्क है और वो ट्रिकी है. होमवर्क है आपको टोन ऑफ द ऑथर बहुत सोच के बताना है. एटीट्यूड ऑफ द ऑथर, टोन ऑफ द ऑथर, और वो कमेंट बॉक्स में लिखना है. अभी चैट में नहीं बताना. आई विल नॉट आंसर एनी ऑफ यू. नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना आपको टोन ऑफ द ऑथर क्या है. ये आपका होमवर्क है, ये ध्यान से करना. दूसरा, कल से CLAT 23 क्रैश कोर्स स्टार्ट्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल फॉर फ्री एवरी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे एट 9 PM. मेक श्योर यू अटेंड दैट. ऑल्सो अभी तक मॉक नहीं लिया है तो ले लो भाई, कल विंडो क्लोज हो जाएगा इसका. क्यों वेस्ट कर रहे हो, एक फ्री अटेम्प्ट है ना, वेस्ट नहीं करना. तो अभी बिफोर आई शो इट इन माई बैकग्राउंड, रिमेंबर होमवर्क आपको कमेंट करना है मेरे वीडियो के नीचे विद द, हाँ प्रीति, यस, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी.
प्रीति, लेट मी एड्रेस टाइटल क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो टाइटल में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे याद रखो, जब टाइटल क्वेश्चन आता है ना, टाइटल इज नथिंग बट द मेन आइडिया। कोई डिफरेंस नहीं होता टाइटल में, थीम बेस्ड क्वेश्चन में, मेन आइडिया क्वेश्चन में, मेन आर्ग्यूमेंट क्वेश्चन में। ये सारे क्वेश्चंस एक ही चीज पूछते हैं। जब हम स्कूल में टाइटल क्वेश्चंस एड्रेस करते थे, तो स्कूल में टाइटल हमको ना बहुत शॉर्ट, क्रिस्प, फैंसी, क्रिएटिव बनाना होता था। भाई ये ऐसा नहीं होता है कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस में, जहां आपको 4 ऑप्शन देते हैं। किसी भी बंदे को कंसोर्शियम में कोई मतलब नहीं है आपकी क्रिएटिविटी से, उसको सिर्फ इससे मतलब है कि आपको आर्टिकल समझ में आया या नहीं आया। तो आर्टिकल समझने की अगर आ गया है तो टाइटल क्वेश्चन कैसे आंसर करना है, अगर इसका मुझे टाइटल मार्क करना है, अभी मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ इस पैराग्राफ का, इस पैसेज का टाइटल आप क्या मार्क करेंगे। मुझे आपकी क्रिएटिविटी नहीं देखनी है। आई वॉन्ट योर टाइटल टू बी डिटेल्ड। लंबा होगा चलेगा, मुझे डिटेल टाइटल चाहिए, वो ही करेक्ट आंसर होगा। ओके अभी बताओ मुझे, टोन नहीं, टाइटल। लेट मी गिव यू सम सजेशंस विद द टाइटल्स। जल्दी जल्दी से बताओ, लेट मी चेक इट। दिया, आई वुड डू दैट नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट फ्राइडे। गेस करो क्या टाइटल बना सकते हो इसका। आई लव योर टाइटल देवाद्रिता, वेरी गुड, वेरी गुड। सिजान, सिजान तुमको क्यों फिर मार्क्स नहीं आ रहे बच्चे, बिल्कुल सही लिखा है तुमने तो। एग्जैक्टली, यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सबका करेक्ट है। अब देखो दीपा, आपने बिल्कुल करेक्ट लिखा है, गलती नहीं है आपके टाइटल में। अगर कोई और ऑप्शन आपके से भी ज्यादा डिटेल्ड हो गया, फॉर एग्जाम्पल दीपा आपका और देबाद्रिता का ऑप्शन है, तो मैं देबाद्रिता वाला ऑप्शन मार्क करूंगी क्योंकि वो और ज्यादा डिटेल्ड है। आई सबको क्लैरिटी? So Deepa says rituals and mind, and Debadrita says rituals ultimately leading to calmness. I would opt for Debadrita's because वो इंश्योर कर रहा है टाइटल कि वो रिचुअल काम माइंड लेके आता है। दीपा के टाइटल में गलती कुछ नहीं है, जैसे मुझे ये नहीं पता कि वो माइंड को ठीक करता है या नहीं करता है, तो वो थोड़ा नैरो हो जाता है। अग्रीड एवरीवन? कैसे चूज करना है टाइटल? टाइटल कुछ नहीं है, बस मेन आइडिया है। जितना ज्यादा डिटेल, जितना ज्यादा क्लोज टू द पैसेज और अप्रोप्रिएट, उतना बेटर आपका करेक्ट आंसर। सिर्फ रिचुअल्स मार्क कर दोगे, टाइटल बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो पैसेज, बेटा सिजान, आपको ये देखना है कि हम पैसेज पढ़ कैसे रहे हैं क्लास में। हो सकता है आप वो सेम टेक्निक नहीं फॉलो कर रहे हो एक्चुअल एग्जामिनेशन में। चलो लेट मी शेयर अ वेबसाइट इन द बैकग्राउंड। गिव मी 1 सेकेंड। लिंक भी शेयर कर रही हूं और वेबसाइट भी शेयर कर रही हूं। देखो चैट बॉक्स में मैंने लिंक शेयर किया है, ओके, एंड शेयरिंग इट इन माय बैकग्राउंड एज वेल। ओह दैट्स क्रेजी, आई कांट टर्न दैट ऑन, आई लुक लाइक अ घोस्ट। कोई बात नहीं, लिंक में शेयर कर दिया, वहां से देख लेना। आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग, आई थिंक बिकॉज ऑफ द पीपीटीज बैकग्राउंड वो सडनली ब्लू से व्हाइट हो गया। आई एम नॉट डूइंग इट, ओके। तो देख लेना ये वाला, ठीक है, मैंने लिंक शेयर कर दिया, मैं फिर से शेयर करती हूँ चैट बॉक्स में। फॉलो दैट लिंक। दिस इज अ वेबसाइट जहां से मैंने आर्टिकल लिया है। आई टेक मेनी आर्टिकल्स फ्रॉम दैट वेबसाइट, और वहां से आपको आर्टिकल्स पढ़ने आप पढ़ सकते हो। एंड follow us on YouTube, Instagram, Facebook, Telegram. Download our app on Google Play if you haven't done that yet. ये लाइक कर देना वीडियो ना, इफ यू लव द आर्टिकल तो कमेंट भी कर देना, मैम बहुत अच्छा आर्टिकल, आई लव्ड द वे यू टीच, आई लव द आर्टिकल दैट यू। लिंक फिर से पोस्ट कर रही हूँ।
just did it again. ठीक है? So I'm going to see you again next Thursday. Otherwise in the classes if you come to our batches. Link I just posted it again in the chat box. ठीक है? अभी भी नहीं मिला तो फिर से पोस्ट कर दिया मैंने. अल्पा शर्मा का चैट देखो बच्चे, चैट में भेज रही हूँ. ठीक है? Winding up the class everyone. See you super soon. Have a very very good day. Very good weekend. Work really hard. अच्छा अच्छा खाना खाओ. फेस्टिविटीज का टाइम है. बहुत सारे पढ़ाई करो. God bless you.